Myself Atharva Sanjay Patil from class 7. So, today we are going to learn about symbols of electric component. So let's start. First we will see a cell. This is a cell. We all know that a cell has a positive terminal and a negative terminal. We will see now. Now we will see the diagram. The long but thin line is positive terminal, but the short and thick line is negative terminal. Now we will move on to second symbol. This is bulb. This diagram is very simple. It's only W written upside down and enclosed in a circle. Now we will move on to next diagram. This is a battery. We all know that a battery is pair of two or more cells. So this is positive terminal and negative terminal of first cell, and this is positive and negative terminal of second cell. Now we will move on to next diagram. Wire. Wire is very simple. It's just a straight line. We all know that a wire contains a rubber tube outside and inside copper wire. Now let's move on to another diagram. Now we will learn on switch and off switch. We have two dots and one line. If the line is connected to first dot and also connected to second dot, then the switch is on. And now we will see off switch. And if the line is connected to first dot but not connected to second dot, then the switch is off. Now I will show you original cell, bulb, battery, wire, switch. So this is a switch. This is a cell. This is positive terminal and this is negative terminal. Now I will show you a bulb. So this is a bulb. It has filament inside it, which is made up of tungsten. Now I will show you a battery. Battery is two or more pair. Battery is a pair of two or more cells. So this is 4-cell battery. Now I will show you a wire. This is a wire. It contains rubber tube and inside it has copper wire. Now let us see a switch. This is switch which we will buy from market. This is switch on and this is switch off. Good morning. My name is Shreya Mayan Kurunwarkar from Standard 7th. Today we are going to learn a new topic, Indian rulers and buildings. What is that one thing that we all need to survive? A roof over our head, a place to call our own home. All living creatures have mastered the art of building shelters. With humans' intelligence, he modified structures from caves to huts, walls, forts, palaces, villages and cities. If we study and understand these buildings, we can understand the history of that kingdom. Now we are going to learn more about the great king Rajaraja and his building styles, who built Rajarajeshwara Temple, which is also known as Brideshwara Temple, located at Tanjavur. It has the tallest shikara, which is 90 tons. You wonder how did they lift it to the top? The architect were genius. They built an inclined path to the top of the temple, placed the boulder on the roller and rolled it all over the way. The path started from more than 4 kilometers away, so it would not be too steep. It was dismantled after the temple was constructed. Even today, the village near the temple is known as Charakullam, the village of incline. This temple is based on Dravidian style. It has great pyramids called Gopuram surrounded by the wall. Vimanas and the shikaras at the top of temple are rectangular in shape. In this temple, Trabeat style architecture is used, on which doors and windows are constructed on the horizontal beam across the vertical column. Airavateshwar temple is a good example of this building styles. Building religious sites displayed the wealth and the power of the ruler, which was the symbol of prestigious of royal dynasty. Thank you. नमस्कार, मैं जोशुआ औचित्य आज आपके सामने एक कहानी पेश करने वाला हूँ जिसका नाम है राजा और मंजरी का प्रेम।
एक दिन एक बहुत वैभवशाली, ताकतवर और बुद्धिमान राजा होता है जिसका एक खास मंत्री होता है। उन दोनों का एक आपस में बहुत प्रेम होता है। तो एक दिन राजा और मंत्री दोनों वन में जाते हैं घूमने के लिए। तो जाते जाते बहुत समय निकलने के बाद उनको बहुत भूख लगती है और फिर दोनों खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। और फिर जाते जाते उनको एक पेड़ दिखता है। उस पेड़ में एक फल होता है, तो खुशी खुशी वो फल तोड़ते हैं और उसके 4 भाग करते और आपस में बांट लेते हैं। तो मंत्री जी को भूख लगी थी, इसलिए मंत्री जी ने वो जल्दी जल्दी से खा लिया। और खाने के बाद राजा जी के पास फिर से गुजारिश की कि आपके पास जो 2 फल के भाग है उसमें से एक मुझे दे दीजिए। तो फिर राजा जी को मंत्री पर बहुत प्रेम था, इसलिए राजा जी ने वो खुशी खुशी दे दिया। तो फिर वापस से मंत्री जी ने खा के फिर से वापस से गुजारिश की कि वो जो आखिरी आपका फल है, फल का भाग है, वो दे दीजिए। फिर राजा ने गुस्से से मंत्री जी को कहा कि जाओ, मैं नहीं देने वाला। और फिर उन्होंने पूरा एक ही बार में खा लिया। तो मुंह में डालने के बाद वो फल इतना कड़वा था कि वो मुंह में डालते ही डालते राजा जी ने थूक दिया। और फिर मंत्री जी ने बड़े प्रेम से और शांति से राजा जी को कहा कि कड़वा फल जिसकी कड़वाहट आपके मुंह में ना जाए, आपके मीठे मुंह में ना जाए, इसलिए मैं वो खा रहा था। और ये था हमारे कहानी का अंत। सुप्रभात. मी स्नेहल सुनील कुंभार, इयत्ता 7वी. दरवर्षी 7वीचे विद्यार्थी सावित्रीबाई फुले जयंती साजरी करतात. पण यावर्षी कोरोनामुळे आम्ही सावित्रीबाई फुले जयंती साजरी करू शकलो नाही. पण आम्ही व्हिडिओद्वारे 3-4 शब्द बोलणार आहे. सावित्रीबाई फुले या शिक्षिका, कवयित्री व समाजसुधारिका होत्या. त्यांनी एशिया खंडातील पहिली मुलींची शाळा चालू केली. मी आता तुम्हाला एक गाणे म्हणून दाखवणार आहे. माझ्या मनाची भावना मीच बोलते, माझ्या मनाची भावना मीच बोलते. मी सावित्रीबाई फुले बोलते, मी सावित्रीबाई फुले बोलते. माझ्या मनाची भावना मीच बोलते, माझ्या मनाची भावना मीच बोलते. मी सावित्रीबाई फुले बोलते, मी सावित्रीबाई फुले बोलते. उद्देश एकच की तुम्हा मिळावे ज्ञान, उद्देश एकच की तुम्हा मिळावे ज्ञान. सर्व महिला वर्गाचा व्हावा सन्मान, सर्व महिला वर्गाचा व्हावा सन्मान. एका स्त्रीचे दुःख स्त्रीला चांगलंच कळते, एका स्त्रीचे दुःख स्त्रीला चांगलंच कळते. मी सावित्रीबाई फुले बोलते, मी सावित्रीबाई फुले बोलते, मी सावित्रीबाई फुले बोलते. स्त्रीचा आहे या अखिल विश्वाची शान, स्त्रीचा आहे या अखिल विश्वाची शान. सर्वांनीच राखावा तिचा मान सन्मान, सर्वांनीच राखावा तिचा मान सन्मान. तिच्या पायी संसारी सुख वैभव मिळते, तिच्या पायी संसारी सुख वैभव मिळते. मी सावित्रीबाई फुले बोलते, मी सावित्रीबाई फुले बोलते. माझ्या मनाची भावना मीच बोलते, माझ्या मनाची भावना मीच बोलते. मी सावित्रीबाई फुले बोलते, मी सावित्रीबाई फुले बोलते, मी सावित्रीबाई फुले बोलते. धन्यवाद.